करनी, उनसे भी कह दीजिए सर ऐसा ना कि थोड़ा सा पहले हम लोगों को बता दिया करेंगे, या तो टाइमिंग पे रहेगा तो सभी लोग, स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़िया है, टीचर्स के लिए भी बढ़िया रहेगा। और अगर अचानक कोई भी हम ही कहें कि रात को 8 बजे यहाँ चलिए आज हम क्लास अब लेते हैं, तो ये सर स्टूडेंट्स वो के लिए उस बेटर दिन नहीं है। हाँ, कई क्लासेस सर ऐसे ही हो गई, 2-3 क्लास। हाँ, तो हर आदमी को मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो आप लोग कह दीजिएगा, हमसे भी बात हुई, हम भी बोल देंगे कि ऐसा है कि अचानक क्लास लेना नहीं चाहिए, या तो अचानक क्लास लेना जैसे हमारा 10 मिनट लेट हो गया तो ठीक है, आप लोग भी प्रिपेयर्ड हो कि हाँ सर 5 मिनट 10 मिनट लेट किसी का हो सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, आपने व्यक्तिगत किसी उसकी वजह से लेट हो सकता है, रूटीन की वजह से। तो लेकिन सडन अगर 10 मिनट पहले हम कहें कि आप 4 बजे आप कनेक्ट हो जाइए, तो हर लोगों के अपने काम हो सकते हैं, केवल पढ़ाई तो नहीं है, तो इसलिए अच्छा तो नहीं है, मैं बोल दूंगा। और आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, आई थिंक ये सब चीजें तो आप लोग कंसर्न टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी बोल दूंगा वैसे, लेकिन एक ये भी आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगी, क्योंकि अब समय बहुत कम है और सभी लोग अब चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक कोर्सेज को खत्म किया जा सके। कुछ लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके, हो सकता है शाम को, दिन को, रात को। तो आप लोग जरूर अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग हमेशा रेडी रहिएगा और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन ये जरूर है कि तुरंत करना नहीं सही है, कि तुरंत करना, अगर आपका क्लास है तो उस बीच तो ठीक है, लेकिन बिना क्लास के, बिना पहले की इन्फॉर्मेशन के लेना नहीं सही है, मैं बता दूंगा, उनसे बोल दूंगा। और नो सर, वो सर अपने से नहीं लिए थे, फिर सर हम लोग काफी लोग थे जिनको क्लास करवानी थी सर की, तो कॉल करके बोले थे, तो सर आधे घंटे बाद क्लास लिए थे, उसमें भी लेट हुए थे। जो लोग उस टाइम ग्रुप में एक्टिव, उन्हें बस नोटिफिकेशन नहीं मिला इसका। और सर जो शेड्यूल है उस हिसाब से सर, मतलब राकेश सर क्लास नहीं लेते। जैसे उनका थर्सडे को है तो थर्सडे को क्लास नहीं होती है, वो क्लास फिर पोस्टपोन हो जाती है, या तो फ्राइडे को होती है या तो फिर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के वो मतलब फुलफिल। ये तो चीजें ऐसी नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ऐसा वो नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि उनके हो सकता है, जैसे हमारा ही कई दिन है तो उस दिन और भी सब्जेक्ट में क्लासेस रहता है, तो उस दिन आदमी कोशिश करता है, क्योंकि एक क्लास पे फोकस रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो चूंकि ये हमें लगता है कि रिलैक्सेशन सबको मिला है ऑनलाइन क्लास लेने का, तो आदमी शाम को भी ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत हार्ड फास्ट नहीं होने की, हमने इसीलिए बहुत ज्यादा किसी को हार्ड फास्ट होने के लिए कहा भी नहीं है कि आप अपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे लीजिएगा, क्योंकि क्लास में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उस अदर टाइम पे पता नहीं क्लास खाली होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें तो हमेशा आपका क्लास खाली है। तो बस अगर आप लोगों का अगर कंसेंट मिल जाए कि हाँ हम इस समय खाली हैं, इस समय सब पढ़ा दीजिए, तो मुझे लगता है हर टीचर पढ़ा के अपना कोर्स खत्म करना चाहेगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई चाहता है कि नहीं हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेके अपना कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, तो ये तो अच्छी बात है, जल्दी से खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि वो जो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए तो कोई इस पे फोकस नहीं कर पा रहा है और इसको मैनेज भी नहीं किया जा सकता है। तो इट इज अप टू टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो आप लोग आपस में मैनेज कर लीजिए, बात कर लीजिए अगर वो। हाँ, लेकिन ये जरूर प्रायोरिटी हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें सिलेबस खत्म कराना है। और वो सिलेबस खत्म कराने के लिए जो है वो अगर हमें 1 घंटा या 2 घंटा, हो सकता है हमको भी एक एक्स्ट्रा लगे, नॉर्मली हम एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर 1 आध घंटा लेना पड़ेगा तो हम भी ले लेंगे। तो इसके लिए आप लोग ना बहुत ज्यादा ये हुई है, आप लोग पहले से बात जरूर कर लीजिए से। और अगर आप लोग बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, सब लोग बिल्कुल आपके फ्रेंड्स की तरह से हैं, बिल्कुल आप लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देनी हम लोगों को है। हाँ ठीक है, बहुत जितने यहाँ पे टीचर्स आपको मिलेंगे या आप लोग जो पढ़ते हैं, तो सभी लोग जो है आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देने के लिए है। आप लोग बात करेंगे और जेन्युइन रीजन है तो क्यों नहीं चेंज करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उसके बावजूद नहीं तो बताइएगा, हम बोल देंगे, हम किसी से बोल देंगे कि हाँ तुरंत ना क्या करें। और हाँ लाओ राधे, क्या है लाओ, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, अच्छा ये दूसरा वाला है क्या, ये लास्ट है हमें लगता है। लाओ, अब तो सबका चला गया ना, ठीक। ये जरा मनीष से पूछ लेना कि जो बच्चे जो है ये बीएचयू के पढ़ते हैं, बीएचयू से पास आउट हुए हैं, क्या उनका भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन जमा होना है क्या? तो नहीं जमा करते हैं ना, एक बार जरा पूछ लेना। हाँ हाँ, नहीं, जैसे अगर वहां से बीएससी किया है, मान लो डिपार्टमेंट से किया है और यहाँ एमएससी कर रहा है,
तो उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लगेगा? सर एमएमवी का भी पूछ लीजिएगा। नहीं लगेगा टीसी लगेगा, बता रहे हैं कि टीसी लगेगा। तो हम एक बार फिर कंफर्म कर लेंगे, जो हमारे ऑफिस के इंचार्ज हैं उनसे हम बात कर लेंगे। वो लोग टेक्निकल चीजों को ज्यादा जानते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हर साल हम लोग एडमिशन करते हैं और उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं, फिर हम लोग पढ़ाने लिखने पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। तो वो लोग एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है और जो सही सूचना वो बताएंगे। तो अभी जो हमारा वो है प्यून है, वो बता रहा था कि नहीं सर जमा करते हैं, लेकिन जो हमारे ऑफिस इंचार्ज हैं उनसे हम बात करके आप लोगों को कल कंफर्म करते हैं। एनीवे, सो लेट अस स्टार्ट और सब्जेक्ट। तो लास्ट टर्न पे हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम की बात कर रहे थे। तो जैसा कि वन वेरिएबल कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इनवर्स फंक्शन थ्योरम फॉर वन वेरिएबल। तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम फॉर वन वेरिएबल। So it says that if f is a function from some interval I of r to r, which is C1. C1 means it is differentiable, f is differentiable and its derivative is continuous. F is differentiable and its derivative is continuous. Further, suppose there is a point x0 in I, such that this f dash x0 is not equal to 0. सर सर जैमबोर्ड का लिंक शेयर कर दीजिए ना। Oh, it is not shared. शेयर तो है, ये शेयर नहीं है क्या? लेट लगता है, लेट ज्वाइन किए इसलिए। ऐसा तो मुझे नहीं कोई दिक्कत लग रहा है। हो सकता है आपके वहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा शायद, क्योंकि हमें लगता है सभी लोग देख रहे हैं ऐसा। एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, किसी का रिक्वेस्ट ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो ओके सर, मे भी कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने सबको शेयर कर दिया। यस सर, चैट बॉक्स में लिंक भेज दीजिए ना सर। हाँ सर लिंक भेज दीजिए ना चैट बॉक्स में। नहीं, लिंक नहीं भेजा है क्या हमने? नो सर। नहीं, लिंक तो भेजा है। नो सर। गूगल मीट का लिंक भेजा है ना? भेजा है, आप लोग देखिए 11:05। जैम बोर्ड का वो है। अच्छा, जैम बोर्ड का अलग से लिंक होता है क्या? ये तो आप लोग आपस में शेयर कर लेते हैं ना, क्लास के बाद हमें याद है आप लोग कर लेते हैं शेयर शायद। सर 2-3 दिन से आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं हो पा रहा। अच्छा ऐसा है क्या? तो इसका कुछ ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे दिख रहा है। यस, ये शेयर चलिए हम कर देंगे। शेयर जो है आप लोगों ने कुछ DST सिम्स के नाम से बनाया था ना? ग्रुप का नाम क्या था आप लोगों का? यस सर, DST मैथमेटिक्स का। DST मैथमेटिक्स, DST मैथमेटिक्स था। हाँ, DST मैथमेटिक्स @googlegroups.com। मैथमेटिक्स, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है मैथमेटिक्स। DST अंडरस्कोर तो नहीं है ना DST के बाद? नहीं सर, DST मैथमेटिक्स @googlegroups.com। ग्रुप्स ओके। 20 मिनट तो निकल गया हमें। एनीवे, so this is the statement of inverse function theorem for one variable calculus. So if f is a function from interval I to r, and if this f is a continuously differentiable function, and suppose there is a point x0 such that this f dash x0 is not equal to 0, then there exists a neighborhood of the point x0 in this I. So this is your interval I,
and f is a function from here to some r. So this is your r. So x0 is a point such that at this point this derivative is not equal to 0. Derivative is not equal to 0. Then there exists a neighborhood of this point, say x0 minus epsilon, x0 plus epsilon. So this is small neighborhood, x0 minus epsilon, x0 plus epsilon. So there exists an epsilon positive such that this f is a diffeomorphism on this interval onto its image, such that this f is a diffeomorphism, means it is differentiable. And suppose here is your fx0, and suppose this is your, maybe you may call this x0 minus epsilon, x0 plus epsilon as I dash. This x0 minus epsilon, x0 plus epsilon as I dash. So suppose this is your, this interval is fi dash. So this f is a diffeomorphism from this I dash to fi dash. F is a diffeomorphism from I dash to fi. What it means that this f is, this is given that f is differentiable at each point of I dash, and also the inverse function from fi to I dash, say g. G is a function which is the inverse of this f, or you may call this f of inverse, such that this, just like the definition of inverse, g o f is equal to identity, and f o g is also equal to identity. So this f inverse, which is a map from fi to fi dash, fi dash to I dash, this f inverse is a map from fi dash to I dash, and this is also differentiable at each point of this fi dash. And moreover, not only that, its derivative at the point, say fx0, in fact at each point fx, you can say, so its derivative at maybe you may write at the point fx. So the derivative of this inverse function, derivative of this, you can say this inverse function f inverse dash fx, this is nothing but 1 upon derivative of f dash x, right? So this is the inverse function theorem, that the inverse function theorem for one variable, that if f is a differentiable function or a C1 function from open interval I to R, and there is a point where this derivative is not equal to 0, then there exists a neighborhood. कोई जरूर नहीं कि पूरे इंटरवल में आपको ये डिफ्यूमॉर्फिज्म का मतलब वो बाइजेक्शन होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए, होम्योमॉर्फिज्म होना चाहिए, मींस कंटीन्यूअस एंड इनवर्स कंटीन्यूअस होना चाहिए, और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए. दिस एफ इज डिफरेंशिएबल एंड इट्स इनवर्स शुड आल्सो बी डिफरेंशिएबल. दिस इनवर्स शुड आल्सो बी डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ दिस डोमेन. तो अगर ऐसा है तो इनका कहना है कि अगर f आपका C1 है और f dash x0 not equal to 0 है, then f may not be diffeomorphism on the whole interval, but there exists a neighborhood. There exists a neighborhood of the point x0, and also the neighborhood of its image fx0, such that this f is diffeomorphism on these two intervals. इस इंटरवल को अगर आप i कहते हैं, इसको fi कहते हैं, तो इन दोनों पे diffeomorphism है, यानी इसका आप इनवर्स फंक्शन आपको मिलेगा और इसके इनवर्स की जो डेरिवेटिव होगा उसको हम इस f के डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं. f के डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं, that is nothing but 1 upon f dash x. And because this f dash x0 is not equal to 0, this 1 upon f dash, this makes sense. 1 upon f dash x is also not equal to 0. तो वो नीचे इनवर्स बोला, डेरिवेटिव का इनवर्स है, इनवर्स का डेरिवेटिव, इनवर्स का डेरिवेटिव. So this is the inverse. इसको आप अगर f
इनवर्स को आप जी कहना चाहते हैं तो ये जी डैश है बेसिकली, जी डैश। तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, राइट। और इसका प्रूफ आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप एटलीस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका आई इंटरवल है and is f dash x0 not equal to 0 and its derivative is continuous, f dash x0 not equal to 0 and derivative is continuous, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डेरिवेटिव है वो एक ऐसा इंटरवल, आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करिए, दिस डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, रिमेंबर डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू, मींस डेरिवेटिव को एज ए फंक्शन अगर आप ट्रीट करें एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस देयर इज अ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट x0, इस x0 पे 0 नहीं है, इसका मतलब एक नेबरहुड मिलेगा जिस नेबरहुड पे 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इस नेबरहुड पे फंक्शन पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस नेबरहुड में, और अगर एफ डैश नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो अगर आपको एक स्मॉल नेबरहुड मिल जाएगा, मान लीजिए कि कोई पॉइंट x0 है और एक स्मॉल नेबरहुड में अगर आपका फंक्शन कोई इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यू कैन सी योर फंक्शन इज एटलीस्ट बाइजेक्टिव फ्रॉम हियर। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट x के लिए आपको y मिलेगा और हर पॉइंट y के लिए आपको x मिल जाएगा। सो देयरफॉर व्हेनेवर you have some monotonic increasing or monotonic decreasing function in that neighborhood, at least you can say that the function is bisective. And also you can prove the derivative of its inverse, and you can exactly find the formula of this kind. So I'm not going to prove this theorem, so basically I have to prove in general case, so this is just for motivation. So now what is the statement for inverse function theorem in multivariable case? So is it okay to everybody? आप लोग ये फील कर रहे हैं क्या है? अगर कोई फंक्शन वन वेरिएबल के केस में i से r पे कोई c1 फंक्शन है, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है, तो पूरे इंटरवल में ना सही लेकिन एक नेबरहुड आपको ऐसा मिलेगा जिस नेबरहुड में वो फंक्शन आपका डिफ्यूमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये है कि x0 और इसका इमेज अगर fx0, तो x0 का एक नेबरहुड i मिलेगा, fx0 का एक नेबरहुड मिलेगा जो इस i का इमेज fi होगा। तो इस i और fi जिसपे ये फंक्शन f आपका डिफाइंड है, इसका डोमेन i है, इसका रेंज fi है, तो इस दोनों सेट i और fi के बीच में ये जो फंक्शन एक डिफ्यूमॉर्फिज्म है, यानी f डिफरेंशिएबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स कंटीन्यूअस होगा और साथ ही साथ इनवर्स डिफरेंशिएबल होगा। एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन आल्सो राइट द value of derivative at any point of this small neighborhood. So this is very interesting. You'll see that sometimes it's very difficult to find explicitly this inverse function, but the importance of inverse function theorem is that you can write the derivative of inverse explicitly in terms of derivative of f. That is very interesting. ये कई बार ऐसा आप लोग देखेंगे मल्टीवेरिएबल केस में भी और वन वेरिएबल के केस में भी कि एक्सप्लिसिट अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए तो उसका इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल है। इनवर्स आप एक्सप्लिसिटली कई बार हो सकता है ना भी लिख पाएं, लेकिन इनवर्स फंक्शन थ्योरम का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि उसके इनवर्स का डेरिवेटिव आप जरूर लिख सकते हैं। इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो एफ के डेरिवेटिव के टर्म में आप एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इनवर्स फंक्शन। और आप देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे और मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में आप जाएंगे आपको इनवर्स फंक्शन थ्योरम मिलेगा। So now I'm stating the inverse function theorem for this multivariable case. Inverse function theorem. So let this f from U, which is open subset of Rn to Rn, be a C1 map. C1 map, and this derivative at some point x0 is non-singular. यहाँ जीरो की बात तो हम करेंगे नहीं क्योंकि मैट्रिक्स एक मिलेगा, तो इज नॉन सिंगुलर
non-singular for some x0 in U, then there exists a neighborhood. Then there exists a neighborhood V of x0 and a neighborhood W of fx0 such that f restricted to V, which is a map from V to FV, but this FV is equal to W. So this has its inverse G. So where G is a map from this W to V, इसका मतलब क्या हुआ कि this F is equal to Y for every Y in its domain, and GOF of X is equal to X for every X in V and for every Y in W. तो ये इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स, इस F का इनवर्स मिलेगा, उसका ये मतलब है कि FOG of Y is equal to Y and GOF of X is equal to, basically it's identity function. FOG is identity of V and GOF is identity of, FOG is identity. So there exists its inverse, and अभी तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, and not only that, G is differentiable also. G is differentiable at each point of W, and moreover, its derivative, the derivative of G at the point Y, this is nothing but the derivative of F at the point GY and its inverse. So this is the statement of inverse function here. So let us explain each and every statement and then we'll prove. So again, you see this U, suppose U is a open set here and F is a map from, so this is open subset of Rn, U is open subset of Rn, and this is your again subset of Rn. So suppose this is your range set, and x0 is a point. So this F is C1. F is C1 means F is differentiable and its derivative is continuous, or you can also say equivalently that all the partial derivative of all components exist and continuous. इसके जितने भी कंपोनेंट के पार्शियल डेरिवेटिव से सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस है, तो F आपका C1 हो जाएगा. This is basically necessary and sufficient condition for F to be C1 is that all its partial derivatives exist and continuous. तो एक पॉइंट ऐसा x0 है जिस पॉइंट पे ये F आपका, इसका डेरिवेटिव जो है वो नॉन सिंगुलर है. So this derivative is non-singular at one point. Then he is saying that there exists a neighborhood V of x0, and suppose this is your fx0 point. So there is a neighborhood V of fx0, W, this is W of fx0 and V of x0, such that this F has its inverse in this set. This F has its inverse as G. Inverse का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट इस W का आप लेते हैं, G मैप करिए, फिर कंपोज विद F. So G compose with F for every point Y in W is equal to Y. And similarly, if you go via F and come back via G, this is equal to X for every X belongs to V. So this should be identity map. FOG is the identity of this subset and GOF is the identity of this subset. तो हर ये जो फंक्शन दिया हुआ है F, इसका इनवर्स जो है वो इस पूरे सेट W में आपको मिलना चाहिए. साथ ही साथ ये G डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो एक ऐसा नेबरहुड हमको मिलेगा जिस नेबरहुड में
उसके नेबरहुड के इमेज पे इनवर्स भी हमको मिल रहा है, and not only this inverse exists, it is differentiable, and moreover this inverse function theorem says that the derivative of its inverse at any point y in W is given by the inverse of derivative of f at the corresponding point here. अगर यहाँ y पॉइंट लेते हैं तो gy पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो इस gy पॉइंट पे जो f का डेरिवेटिव है उसका इनवर्स मैप होगा. दिस इज इनवर्स मैप. अगर आप इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स है आपका ये g का डेरिवेटिव. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इसका स्टेटमेंट में आया कि नहीं? स्टेटमेंट क्लियर है कि सर लास्ट लाइन? हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन f जो है या मैप आप कह लीजिए, अगर कोई मैप f ओपन सेट ऑफ Rn से ओपन सेट ऑफ Rn में एक मैप है और रेंज के बारे में नहीं कुछ कहा जा रहा है, बस केवल डोमेन में कहिए कि U is open subset of Rn and f is a map from U to Rn such that there is a point x0. There is a point x0 in this open set and this derivative at this point is non-singular. So this is non-singular. This is very important. This is non-singular. एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव नॉन सिंगुलर है, तो कह रहे हैं कि एक आपको नेबरहुड उस x0 का मिलेगा v और उसके इमेज का एक नेबरहुड मिलेगा w, such that the inverse of g is well defined on this neighborhood w. It means that f of gy is equal to y for every y in w and g of x is equal to x for every x in v. And this g is differentiable also. केवल देखिए एक कंडीशन माना गया है कि एक पॉइंट पे केवल अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन सिंगुलर हो जाए, एग्जैक्टली जो वन वेरिएबल कैलकुलस है उसी को यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया है. एक पॉइंट पे केवल डेरिवेटिव नॉन सिंगुलर होने का एडवांटेज आप देखिए क्या है, एक नेबरहुड मिलेगा और उसका इमेज यहाँ मिलेगा, सच दैट इस इमेज पे इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. इनवर्स एग्जिस्टेंस का मतलब जी ओ एफ एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये जो इनवर्स मिलेगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा. एंड नॉट ओनली दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर दैट यू कैन एक्सप्रेस the derivative of inverse in terms of the derivative of the given function f. f के डेरिवेटिव के टर्म में हम इस g के इनवर्स के डेरिवेटिव को लिख सकते हैं. ओके, Yes, sir. so let us prove this. Let us prove this theorem. So for simplicity, we assume that this x0 is equal to 0. हम वैसे अगर जनरल केस भी दिया गया, हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि जनरल केस को भी इस पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम एज्यूमिंग समथिंग एंड विल प्रूव फॉर दिस सिंपलर केस एंड देन विल शो दैट एक्चुअली यू कैन ऑब्टेन दिस सिंपलर केस फ्रॉम दिस जनरल केस आल्सो. So first we'll prove this theorem. Yeah, the proof. So first we'll prove. First we shall prove this theorem. This theorem for a function f tilde from some open set u tilde to Rn. This is also subset of Rn. First we shall prove this theorem for a function this such that कुछ assumption हम मान रहे हैं और फिर बाद में हम दिखाएंगे कि अगर जनरल फंक्शन भी दिया गया, अगर इसके लिए आप प्रूव कर ले रहे हैं तो आप किसी भी फंक्शन के लिए प्रूव कर सकते हैं. तो ये हम एक assumption मान रहे हैं, थोड़ी सिंप्लिसिटी इससे हो जाएगी. सर ये लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए एक बार.
फर्स्ट वी शैल प्रूव दिस थ्योरम फॉर ए फंक्शन एफ टिल्डा। एफ टिल्डा एक हम दूसरा फंक्शन मान रहे हैं, हम इसको एफ से रिलेट करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम एक सिंपलर केस को स्टडी करें। बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ है, हम करना क्या चाहते हैं, ये जो x0 पॉइंट है इसको हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि जो फंक्शन इस तरह से है, ये x0 पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव नॉन सिंगुलर है, दैट पॉइंट इज 0 एंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट वाया दिस मैप f इज आल्सो 0, राइट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस f0 is actually 0, f0 is equal to 0, and also the derivative of the function at 0, it is given to be non-singular. Let us assume that its derivative is just identity function. ये दो assumption हम मान रहे हैं, और उसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ साहब इस 0 का एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा, और इसी तरह से यहाँ इस 0 का नेबरहुड मिलेगा, जिस नेबरहुड में आपका f टिल्डा डिफोमॉर्फिज्म होगा। और फिर लास्ट में हम दिखाएंगे कि एक्चुअली अगर उस f टिल्डा का डिफोमॉर्फिज्म आपको मिल जाए, उसका इनवर्स अगर आपको मिल जाएगा, तो इस जनरल केस f का भी डिफोमॉर्फिज्म, इसका भी इनवर्स आपको मिल जाएगा। So let us prove for this simpler case, so such that this f tilde 0 is equal to 0 and the derivative of f tilde at the point 0 is equal to identity, right? बहुत ही सिंपल हो गया। ये फंक्शन एक ऐसा हमने लिया है कि इस फंक्शन का 0 पे इमेज 0 हो रहा है, और 0 पे इसका डेरिवेटिव भी आइडेंटिटी है। तो इस तरह से फिर एक हम पिक्चर बना दे रहे हैं। सो दिस इज योर से योर u tilde and here is your say fu tilde, this is your f tilde map, f tilde u tilde, yes, this is your 0। ये जो नोटेशन आप यूज कर रहे हैं f टिल्डा, सर ये बनाते कैसे, नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्ट। नहीं, ये f लिखिए और इसके ऊपर ये टिल्डा, ये नोटेशन इस तरह का, ये नोटेशन, ठीक है। इस तरह का आप लोगों ने नोटेशन नहीं कहीं देखा है? बार एक होता है और ये टिल्डा नोटेशन है, थोड़ा सा कर्व्ड लाइन एक आप ड्रा करिए, एस की तरह से है। आप इधर से ऐसे स्टार्ट करिए और ऐसे बनाइए, थोड़ा सा एस या इंटीग्रल का साइन आप जैसे बनाते हो, उस इंटीग्रल को आप वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना दीजिए, तो वो आपका टिल्डा कहा जाएगा, ठीक है। तो एफ टिल्डा, तो एफ टिल्डा यू टिल्डा, ओके। तो आपको देखना है कि इस 0 पॉइंट का एक नेबरहुड आपको मिलेगा और इस 0 का एक नेबरहुड मिलेगा, बिकॉज यू हैव एज्यूम्ड दैट f0 इज इक्वल टू 0, f टिल्डा 0 इज इक्वल टू 0, ये आपने माना है। तो एक इसका नेबरहुड मिलेगा, एक इसका नेबरहुड मिलेगा, सच दैट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इन दिस नेबरहुड एग्जिस्ट। So you have to find a function g tilde such that f tilde composed with g tilde or g tilde composed with f tilde is identity, and you have to also find the derivative of g in terms of derivative of f, right? Okay. So we'll prove this result in several parts. So in first part, I am considering another function g. So let us consider, so in different steps I will prove this result. So suppose g be a function defined like this, this g of x is equal to x minus f tilde x, क्योंकि सभी Rn के एलिमेंट्स हैं, तो f tilde x भी Rn का एलिमेंट है, x भी Rn का एलिमेंट है, तो आप एज ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज g is a function defined like gx is equal to x minus f tilde x, okay. So what is the advantage of this? Its advantage is this, because f tilde 0 is equal to 0, so therefore g0 is also equal to 0, right? Its advantage is g0 is equal to 0 minus f tilde 0,
but f tilde 0 itself is 0, so therefore 0. And the second advantage that its derivative, if you calculate the derivative of this g, अगर आप ऐसे डेरिवेटिव लिखते हैं, so derivative of g at the point x, because this is the difference of two functions, differentiable functions, what is the derivative of x? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव तो मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ f tilde at the point x. यहाँ पे डैश लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप g लिखा हुआ है तो ये g tilde और डैश लिखने की जरूरत नहीं है. Simply the derivative of g at the point x. What is the derivative of x? Sir, 1. 1. This x is element of Rn. x Rn का एलिमेंट है. आप बिल्कुल उन चीजों को भूल जाइए जो वन वेरिएबल में आपके दिमाग में बैठा हुआ है. This x is element of Rn. और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अब बताइए क्या होगा? Is not in वन वेरिएबल कैलकुलस के यहाँ x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, 1 आ गया. एंड टप्पल में आएगा केवल एक पोजीशन 1 होगा, रेस्ट 0 होंगे उस टप्पल में. I is a function. Suppose I is a function, or yes, I is a function from Rn to Rn given by Ix is equal to x. Is it? अगर इस तरह का कोई फंक्शन ले लीजिए तो ये फंक्शन क्या है? Identity function. Identity function है. Identity function है. Is it also a linear transformation? Yes, sir. Identity function is a linear transformation. Then what is the derivative of I at any point x? हमने बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई है तो उसके किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव वो खुद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. राइट? अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव हमने क्या बताया था? आपको याद होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका डेरिवेटिव वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद होता है. बिकॉज आई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई इज आइडेंटिटी फंक्शन, इट्स डेरिवेटिव इज द फंक्शन इटसेल्फ. सो देयरफॉर दिस इज जस्ट आइडेंटिटी फंक्शन. तो टपल्स में लिख लीजिए और पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स बना के दिखा दीजिए जल्दी से. हाँ, वैसे भी कर सकते हैं आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है ना, जैसे अशोक आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. अगर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखें या आप चाहें तो इसका कंपोनेंट वाइज अगर आप इस मैप को लिखें तो क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए कि इसको आई इज ए मैप फ्रॉम आर एन टू आर एन, तो अगर कंपोनेंट वाइज इस मैप को लिखें तो क्या होगा? इस suppose you write the component wise, say I x या x1 x2 xn, this is equal to, in vector form this is again x1 x2 xn. तो ये कंपोनेंट से i1 हो गया, i2 हो गया, in हो गया. तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपका होगा वो क्या होगा? ये फर्स्ट कंपोनेंट को x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट आप करिए तो 1 मिलेगा, और बाकी को x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 0 0 0 मिलेगा. फिर सेकंड इसको x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा और बाकी सभी 0 मिलेगा. 0 0 और यहाँ 1 आपको मिलेगा. सो दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स. So this is the derivative of identity function. ध्यान देंगे ये पूरा फंक्शन है और ये आपका उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन एट एनी पॉइंट एक्स. दिस इज इंटरेस्टिंग. यहाँ पे एनी पॉइंट एक्स हमने लिखा है और यहाँ पे केवल आई, यहाँ आई एक्स हमने नहीं लिखा है. ध्यान देंगे, आई हैव नॉट रिटन आई एक्स हियर. So dix is simply I, not ix. बिल्कुल केयरफुल होकर आपको लिखना है एक मैथमेटिकल स्टेप्स को. So derivative of I at any point x is nothing but I as a map. So this is identity map minus derivative of
f tilde x0 at the point x. Is it okay? यस सर। यस सर। ओके। अब दूसरी चीज ये है कि आपका ये जो फंक्शन है जो f tilde वो दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव उसका कंटिन्यूअस है। डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, सो देयरफॉर the derivative of g will also be continuous because this is continuous. So the difference of two continuous function is continuous. So therefore this dg will also be continuous. So this implies that this dg, since this f tilde is c1, this implies that this derivative of g is also continuous. It's continuous. Derivative of g is continuous. What it means? It means for any positive epsilon, there exists you can say some delta or some number r, or a ball of radius r, such that whenever you are inside a ball of radius r, whenever this norm x minus 0 is less than r, this implies that the derivative of g x minus derivative of g at 0, this is less than this epsilon. So let us choose this epsilon as some number. So let us take this epsilon as say half. So because of continuity, for any epsilon you will get some number. तो epsilon को हम अपनी सुविधा के लिए half ले रहे हैं. So let us take this as half. So derivative of g at x minus derivative of g at 0, this is strictly less than half whenever you are inside this ball, right? But derivative of g at 0, क्या होगा यहाँ पे? Derivative of g at 0 अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करिए तो derivative of f at 0, but derivative of f at 0 you have assumed as identity. So again I minus I. 0 vector. This 0 is a 0 vector. So derivative of g at 0 is 0 vector. So therefore this is 0 vector. So norm of this minus 0 vector is just norm of derivative g at the point x, and this is less than half. So whenever you are inside this open ball centered at 0 and radius r, the derivative of g, norm of derivative of g must be strictly less than half. Now we call this ball as our v tilde. ये जो r रेडियस का हमको बॉल मिला है जिसके लिए डेरिवेटिव ऑफ g हाफ से छोटा है, उसी बॉल को हम कहेंगे v tilde. So this is our v tilde. So let बल्कि u tilde यहाँ आपने लिया है ना, so let us call this as a v tilde. So let this ball centered at 0 and radius r as v tilde, and the image of this ball v tilde as w tilde. यही हमारा बॉल है, इसी को हम दिखाना चाहेंगे कि इस v tilde से w tilde में ये जो हमारा f of v tilde मिला है, f tilde of v tilde, ये जो बॉल मिला है ये w tilde है हमारा, और ये हमारा v tilde छोटा सा बॉल यहाँ पे है जिसका रेडियस r है. अब हम ये दिखाएंगे, हमारा एम रहेगा कि this f tilde is actually a diffeomorphism between these two open balls. Is it okay? Yes, sir. Yeah. So now I'm going to divide my goals. So first aim, हमारा aim क्या होगा? So first we'll show that ये v tilde तो आपका open ball है ही है. This is of radius
R and centered at 0, and this W tilde is actually its image via this F tilde of this V tilde. So this is already open. I am going to show this W tilde is open. So my first aim will be tilde is open. This W tilde is open. My next aim will be to show that I think this should be the second. पहले इसको first पे हम ये दिखाएं. चलिए order बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं. So first we'll show that this F tilde is actually bisective. Is bisective. Is bisective from V tilde to W tilde. And this W tilde is open. And then we'll show that, so this is your V tilde, this is your W tilde, and F is a map from, F tilde is a map from V tilde to W tilde. And we'll show that there exists a map eta. There exists a map eta. So our third aim is to show that there exists a map eta from this W tilde to V tilde, W tilde to V tilde, which is the inverse of this F tilde. And moreover, we'll show that the derivative of this eta at the point y, is nothing but the derivative of F tilde at the point this eta y, you can say eta y and its whole inverse. Okay. Right. So in part we'll show these things. First we'll show that this F tilde is bisective. Then we'll show this V tilde is already open, and we'll show this W tilde is open. So what it means? So it means differentiable map, so it's already continuous. This is open, and its inverse is open. So if this is open, it means that this F tilde is actually going to be homeomorphism. So this inverse of this F tilde, inverse of this F tilde, that is eta, the inverse image of this eta of this open set is open. So therefore this eta is also continuous. So F tilde is continuous. F tilde is actually differentiable. It is already given, and its inverse is continuous. So if you are able to show that this W tilde is open, then this F tilde is going to be homeomorphic. तो इस तरह से हम ये दिखा देंगे कि F tilde जो है वो एक कंटिन्यूअस मैप है जिसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो गया, और तब फाइनल एम हमारा होगा कि एक ऐसा मैप हम दिखाएंगे, ये जो ईटा बेसिकली जो हमने इनवर्स दिखाया है, ये केवल एक होम्योमॉर्फिज्म नहीं है बल्कि ये डिफ्यूमॉर्फिज्म है, और उससे भी ज्यादा इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एक्सप्लिसिटली हम कैलकुलेट करके दिखाना चाहेंगे. सो दिस इज आवर प्लान. So let us prove at least first part. So yeah, आपने देखा है ये चीज हमने बताया कि जो डेरिवेटिव ऑफ g है, this point is to be noted that derivative of g at every point of this ball, at every point of this v tilde is less than half. Is less than half. So you can say, since the derivative of this g at every point of this ball is less than half, for any 2 points, say
x and y are x1, x2, for any point x1, x2 of this B. So this is true for every x belongs to this B tilde. So for any 2 points, सर हमारे नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है। अच्छा लिंक आ गया आप लोगों का, तो आई थिंक सो लेट अस प्रूव ऑन नेक्स्ट डे। ये आप लोग ये 3 एम्स आप लोग याद रखिएगा, हमें क्या प्रूव करना है। हमें लगता है अभी पूरा कल का फुल टर्म लगेगा इसको प्रूव करने में, तो चलिए ठीक है यहीं पे क्लोज करते हैं। यू रिमेंबर दिस स्टेप कि हम लोगों ने यहाँ तक केवल एम हमने बताया था, लेकिन प्रूफ हमने कुछ नहीं किया था। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर